in the morning of 14th October 2023. From tomorrow, our great festival of Mother Goddess Durga, the Navaratri, also begins. आप सबको नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, वणक्कम, salam, hello, greetings. My greetings to you all and thank you for joining. As I have mentioned, that this is for the benefit of all those who are in the field of performing arts. When I was young and practicing and learning and performing, there was no one to tell us about all these wonderful skills. We just grew up thumping and stamping away and running and learning and practicing and rehearsing, traveling. But today, you are so fortunate, we all are so fortunate that the Government of India, Ministry of Culture, offers so many wonderful schemes for financial assistance. I would like to first just share a few thoughts, but before that, I want to pray to Sri Ganesh, Ganapati, Gajanana, Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvignam Kuru Me Deva, Sarvakaryeshu Sarvada. May all our combined collective efforts and endeavors to preserve, promote, and practice the great traditions of India's performing art traditions. May our efforts always be victorious, successful. And now, I'm just sharing the opening thoughts with you. It was what my friend Usha R.K. heard about Prime Minister Modi ji, not about, she heard his speech as I also do. Many of you might hear, but how one word can hit you. And when he says, कब कहते हैं मोदी जी जब कहते हैं कि हमारी इतनी सारी योजनाएं परियोजनाएं उनका लाभ सर्वत्र जाए, आखिरी व्यक्ति तक वो लाभ मिले और उन लाभार्थियों की सेवा हम कर सकें, उससे it triggered a thought, and therefore we have come to this point, this time, where we are going to share some wonderful information about the various schemes. And this is a small endeavor to do a guided tour of schemes specially designed for performing arts. Maybe you already know. आप लोग सब आज बहुत ही टेक savvy हैं. मुझे तो ये सब इतना पता नहीं है. मुझे 4-5 हमारी टीम को इकट्ठा करना पड़ा कि भाई मुझे करना है. आप आइए लगाइए सारा. You know. But still, it's always good to have someone tell us. ये है, ये है, ये है. देखो, जाओ, सोचो, समझो और आगे बढ़ो. That's the only purpose of this particular online session. Maybe some points are left out when you go through that in a hurry. So let's try to go through the schemes one by one. I'm only taking those which are for performing arts. I will indicate the salient points and show on screen where to find relevant information from Ministry of Culture's website, page number 1. And then page number 2. And here is the website information, indiaculture.gov.in. ये संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट है.
जिसमें आप जाके आगे भी देख सकते हैं। अब जो स्कीम्स वहां पे लिखी गई हैं वो कुछ इस प्रकार है। स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर आर्ट एंड कल्चर, ये उनका एक टाइटल है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा है, रेपुटी ग्रांट कहते हैं उसको। फिर है स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, फिर है प्रोडक्शन एंड ऐसे कामों के लिए। तो ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी स्कीम्स है, उनका दौरा हम करेंगे। लेट्स गो ऑन अ जर्नी टुगेदर। फर्स्ट आई विल टेक अप द कल्चरल फंक्शंस एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम, इट्स कॉल्ड CFPGS। आप लोग प्रोडक्शन करते हैं, नृत्य नाटिका करते हैं, उन सब के लिए जो पैसा आपको मिलता है वो उनकी स्कीम से मिलता है। बट ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, ये याद रखना है। ट्रस्ट, सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें चांस नहीं मिलता है। तो सपोर्ट क्या करता है, ये स्कीम से क्या होता है? तो सेमिनार्स भी है, कॉन्फ्रेंसेस भी है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, वर्कशॉप्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, सिंपोजियम है, प्रोडक्शन ऑफ डांस है, ड्रामा है, थिएटर है, म्यूजिक शोज हैं, ये सारा उसमें आ जाता है। पपेट्री भी इसमें आती है, क्योंकि इस वक्त इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कठपुतली वाले जो प्रोडक्शन होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये विशेष करके इसमें बताया जाता है। अब इसकी शर्त क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड? Organization should be registered and functioning for at least 3 years. ये नहीं कि आपने कल रजिस्टर किया और आज आपने एप्लीकेशन डाल दिया कि हमें मदद करो, ना। आप सही तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 3 वर्षों से आपकी सोसाइटी, आपकी संस्था, your organization has been working, because all that will be reflected. I'll come to that. But first of all, it should be registered and working for at least 3 years before you put in your application. अब उसमें जो है आपकी रजिस्टर कहाँ होगी? तो ये होगा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, या कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्ट्स होते हैं उनके तहत रजिस्टर आपकी संस्था होनी चाहिए। उसके बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉलेज फेस्टिवल्स और कोई भी धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस are not eligible for this grant. We'll be very clear about that. क्या करना है? तो प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड मैनेजिंग बॉडी, कौन संभालता है आपके इंस्टीट्यूशन को, संस्था को कौन संभालते हैं लोग? एक कमेटी होती है ना, जिसको कहते हैं मैनेजिंग बॉडी या ट्रस्ट बोर्ड। वो क्या करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां क्या है, हु आर दे, ऑल दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में होना चाहिए, ये नहीं कि आपने लिख दिया हाँ हमारी रजिस्टर्ड है ये नाम है ना। आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका संविधान है आपकी संस्था का, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। और अब आगे की जो मैं बात कर रही हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। दिस इज वन एस्पेक्ट दैट यू हैव टू डू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सेकंड पॉइंट इज that you have to register, we have to register with the fund portal of Niti Aayog. Niti Aayog is constituted by the government of India, and they have created a portal, DARPAN. You have to register your organization, your society there, for which you get a unique ID number, आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपका जब रजिस्टर हो जाएगा उस पोर्टल में,
तो आपको मिलेगा। ये बहुत जरूरी है हर काम के लिए, हर एक स्कीम के लिए, एप्लीकेशन के लिए ये जरूरी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या देना है, ये हम इस ग्रांट की बात कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन ग्रांट की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने देना है आपकी ये आईडी नंबर, जो यूनिक आईडी नंबर आपने लिया है, और आपकी संस्था का पैन कार्ड नंबर वो भी होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, कुछ छिपा नहीं रहे हैं। उसके बाद 25%, यानी आपने यदि समझो कि 1 लाख के लिए आपने अप्लाई किया है, तो कम से कम 25,000 आप लाएंगे अपने स्रोतों से, that you will get from your sources 25% of the applied amount. That also is mentioned, very important. And then आपको ये भी एप्लीकेशन में लिखना है कि इन 3 वर्षों में या गत वर्षों में what have you done, the experience and the work done, that has to be also mentioned, because looking at that, then they take cognizance. अब जो ग्रांट है ये 5 लाख तक इसका प्रावधान है, up to 5 lakhs. Okay, it's not necessary that you get 5 lakhs. Sometimes you get only 3 lakhs, sometimes only 2.5, 2, 1. Depends on your production, your proposal, because it goes to expert committee. And the expert committee evaluates. And if they feel that yes, this is a good proposal, 5 lakh, 5 lakhs can be given, or 4 can be given. So according to that, if the proposal is really wonderful, production is really going to be big, then one can also request, and on that request, and looking at the richness, gravitas of the proposal, Honorable Minister for Culture, he has the authority to raise it up to 20 lakh. This is wonderful. So some proposals can be just given 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, yeah. But if it is a really well planned, well thought out proposal, minister can give up to 20 lakh. Now, this is done. Accounting is very important, because there, if we are not sure, we slip up, then we are in trouble. So the accounting has to be perfect. किस तरीके से आपको ग्रांट मिली है और उसका हिसाब किताब आपने कैसे रखना है, ये भी बात हमें बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए. I'm speaking both in English and Hindi, क्योंकि दक्षिण में अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में, पूर्वी पश्चिम भारत में हिंदी समझते हैं. Therefore, please bear with me. I'll be trying to speak in both languages. है ना? So accounting में आपने क्या देना है? एक तो statement of accounts, आपका हिसाब किताब audited by a chartered accountant, उनके लेटर हेड पे होना चाहिए. कहीं किसी को पकड़ लिया आपको, ऐसे नहीं होगा. Authorized chartered accountant जिनका properly काम है. Stating utilization of government grant in preceding years. एक तो आपका अकाउंटिंग का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा, तो पिछले 3 वर्षों में कम से कम आपको क्या ग्रांट मिली और उसका हिसाब किताब आपने क्या किया उसके साथ. तो यूटिलाइजेशन ये लिखना पड़ता है. उसके बाद ये भी कहा गया है कि यदि समयानुसार, if not submitted stipulated time, you will have to refund the entire amount with the going rate of interest. बताइए आप, ब्याज के साथ आपको ये पूरी रकम वापस गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी. इसीलिए ये काम अच्छे से फटाफट आपका हिसाब किताब साफ आपने उसे करा लिया, चार्टर्ड अकाउंट से करा लिया,
आपने 3 वर्षों का लेखा जोखा दे दिया कि हमने लंबी तरह से एक पैसे टैक्स देने का हिसाब किया है, और ये उसके बाद कहते हैं कि ये कमिटी रिव्यू करेगी पूरा। एक बात हमें ध्यान में और रखनी है जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना आवश्यक है, especially for those who live in metro cities and who are used to meeting a diplomatic corps, who know so many people from corporate world. You cannot invite foreign delegation without proper advice and permission from Ministry of External Affairs. विदेश मंत्रालय की लिखित सम्मति के बिना आप किसी विदेशी डेलीगेशन को अपने कार्यक्रम में नहीं बुला सकते। और वो कैसे मिलेगी आपको? आपको अपनी रिक्वेस्ट मंत्रालय को देनी पड़ेगी। कौन से? संस्कृति मंत्रालय को। उनके थ्रू विदेश मंत्रालय में रिक्वेस्ट जाएगी और वापस हाँ या ना उनके ही द्वारा आपको मिलेगी। So we have to remember that it is first our Ministry of Culture, they will forward it to External Affairs Ministry, and then you get the reply the same way. अच्छा, अब जो है कि इनको ये भेजना है, एप्लीकेशन आपने तैयार कर दी, सारा पैन कार्ड, ये आईडी नंबर सब डाल दिया, ऑथोराइज कर दिया, यूसी सर्टिफिकेट हो गया, तो आप कहाँ भेजेंगे? तो ये आपके पास एड्रेस भी शायद आ रहा है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये we have to send it to Director, North Central Zone, North Central Zone Culture Center, NCZCC. Address is 1414 CSP Singh Marg, CSP Singh Marg, Allahabad. उनका पिन है 211001, यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, उनका आपने नंबर भी नोट करना हो तो उसमें नंबर है, मैं आपको दे देती हूँ, 0532 2421 855। एक और नंबर है 0532 2423 698। तो यहाँ आपने यहाँ सब भेजना है, अपना एप्लीकेशन ये वो सब recommended by, अच्छा ये आपका जो है एप्लीकेशन, it should be recommended by any national academy, state or union territory academies. ये भी जरूरी है कि एकेडमी वाले, सरकारी एकेडमी वाले आपको जाने तो वो recommend करें तो उसको आगे बढ़ाएं। So without that it may not be possible. Although now the Padma awardees are exempted from that. You need not get recommendation, you can send direct. अब ये है कि इसके साथ आपने और क्या क्या कागजात, which are the documents that you have to attach? One, constitution of the organization, जो पहले बात हो चुकी, I mentioned that earlier, that has to be sent. Number two, all details of the board of management, governing body, whatever you call it, each member, their responsibilities, etc. And then copy of latest annual report. यदि आपने 3 साल में भी कुछ काम किया है ना, तो एनुअल रिपोर्ट तो बनती है, हर एक कंपनी की बनती है, वो भी आपने लगानी है। Detailed project report. You have to mention the description, the artists who will participate, duration of the program, etc. अब आपको ये सारी अपनी डिटेल देनी पड़ेगी कि मैं किस लिए ये मांग रही हूँ, ये ग्रांट मांग रही हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा डांस ड्रामा है, ये हमारा म्यूजिक शो है, ये हमारा फेस्टिवल है, जो भी है, और इसमें कौन काम करेंगे, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये सारी आपको खबर और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसके साथ। अच्छा, और है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड बजट, है ना। तो आपको बनाना है, आर्टिस्ट का इतना लगेगा, पर आर्टिस्ट, रिहर्सल का इतना, कॉस्ट्यूम का इतना, म्यूजिक का इतना,
जो भी सारा होता है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो बार बार आता है और जो नहीं आता है, ये एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है वो देना पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास फंडिंग सोर्स, वेयर यू गेट योर फंडिंग फ्रॉम, द सोर्सेस हैव टू बी मेंशन्ड। देन नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस 3 years, 3 आपके जो वर्ष पहले के हैं उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, अगले पिछले वर्ष का बैलेंस शीट देना पड़ेगा, सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे नहीं करना, उठा के कुछ भी भेज दिया ना, इट हैज टू बी सर्टिफाइड। उसके बाद बहुत जरूरी है इंडेमनिटी बॉन्ड, सरकार का बॉन्ड पेपर आता है वो आपको खरीदना पड़ेगा नोटरी से, कोर्ट से बाहर मिलता है, and you have to fill up indemnity bond of appropriate denomination. आप मांग रहे 5 लाख और आपने 2 रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड कर दिया, नहीं होगा, आपको पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, which indemnity bond, what denomination you have to acquire, you have to buy and fill it up as per the performa. And इसके बाद आपका है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन की your bank details have to be also given. Naturally, you are not going to get cash from government. They are going to transfer funds directly to the account of the organization, है ना? तो वो तो आपको देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ना हो तो खोल लीजिए फटाफट, वो तो आपको नहीं मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन संस्था को ही मिलेगा। तो ये कुछ आपके लिए मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज रह जाती है ना तो इतनी डिले हो जाती है, लोग डिले, if you not fill up everything properly, if you not attach everything properly, so apply the mind, be a little patient and do the work to perfection. Proposals are examined, scrutinized by expert committee, और यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी का जो एक ब्यौरा है कि आपकी ये सारी प्रपोजल्स सरकार मंत्रालय कमेटी का गठन करता है, वो बैठ के एक प्रपोजल देखती है, लेकिन उनके लिए भी शर्त है, the condition that the member should not be, any member should not be attached to or have any interest in any of the organizations which have sent proposals, otherwise they are out. They cannot sit in that meeting. ठीक है ना, otherwise it becomes conflict of interest. अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, काफी सारे आपको बता दिया मैंने। ये ग्रांट जो है, it will be released in 2 installments. पहले बार में आपको 75% मिलेगा, 75% of the grant. If it's 4 lakhs, you will get that much. If it's 5 lakhs, you'll get that much, 75% of the grant. And then second installment, the remaining 25%. So ये 2 installment में मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि हमने अप्लाई कर दिया, हाँ आ गई, आपको सैंक्शन लेटर मिल गया, सैंक्शन लेटर भी आएगा तो आपको पहले ये और फिर ऐसे मिलेगा। उसके बाद आपका कार्यक्रम हो गया, then what? आपको कार्यक्रम के वीडियो और लोगों की कमेंट, ये सारी चीजें अपलोड करनी होंगी। You have to upload your videos and so many things on social media platforms. YouTube is a must, Facebook, and very importantly, the Twitter page of Ministry of Culture, Government. In तीनों जगह पे, if you put your upload your videos and whatever else you want to put, then it augments your claim that yes, we have used the grant money beautifully. अच्छा, अब ये आखिर में तो है कि आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट पे तो जाइएगा, और आपको यदि और कुछ करना है पर्सनली
तो ये कहते हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 3 PM and 4 PM, दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में सेक्शन ऑफिसर ब्रैकेट में S and F, पागल का F, सोनल का S, पागल का F, S and F, नंबर दिया है 011, जो दिल्ली का कोड नंबर है। आपके इस फोन में मोबाइल से नहीं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। 011-2464-2157। ये यहाँ पे मैंने आपका पहला चरण खत्म किया। I have completed the first scheme, production financial assistance. I've given you all the details. For more details, always go to the website. Now I come to the second one, which is also very, very important. Financial assistance for promotion of the age-old Guru Shishya Parampara. ये दुनिया के हर देश में होती होगी. I think in most countries of the world, in different ways, there is the tradition of the teacher and the taught, master and disciple. But here in India, भारत में आज भी गुरु कैसे गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. We bow to our great Guru and the Guru Parampara, which began from the Lord Shiva himself, Mahadev, Nataraj. We believe that our tradition begins from there. तो इस गुरु शिष्य परंपरा को और मजबूत बनाने के लिए हमारे मंत्रालय ने ये एक तैयार की स्कीम जो चल रही है, काफी वर्षों से चल रही है, और इसको कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रिजर्विंग प्रमोटिंग गुरु शिष्य परंपरा, ऑल्सो नोन एज रेपर्टरी ग्रांट. इस माने द सेम, ये नाम दिए, ये नाम दिए. तो रेपर्टरी ग्रांट इसलिए है कि गुरु जो विशेष शिष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और जिनको लेके वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ गुरुजी एंड दी स्पेशल स्टूडेंट्स, शिष्यस, डिसाइपल्स who will promote, keep up the Guru Shishya Parampara. That is called the repertory. Repertory grant, उसके बारे में मैं आपको अब बताती हूँ. Eligibility क्या है, यानी who can apply? You need adequate number of artists. It also later says, I will tell you now, अभी बता दूँ, 1 Guru and 2 disciples, Shishyas. You can begin with that, apply. You can apply with that. 1 Guru, 2. It can be taken up to 1 Guru and 18 students, Shishyas, disciples. So it has to be a gradual ascendance. People, the ministry, the experts have to see that year after year, the Guru has been teaching and taking further the students up and up and up. Okay. Now, the criteria, etc., is all there. I will tell you. One more criteria I would like to mention. It's not enough that a Guru teaches the 2 or 18 or 10 Shishyas. They have to qualify good enough to perform performances on all India basis. सरकार आपको कह सकती है कि हमारे इस फेस्टिवल में आपको जाना है, तो आपकी रेपर्टरी your should be so सशक्त, so strong, so well trained. The Guruji and the repertory went and performed. This is a very important qualification and a condition. Now, 2 productions a year are asked for. If you are getting repertory grant, annually you have to produce 2 wonderful. If you are in dance and dance dramas or production, whatever you call it, music, theatre, whatever, 2 productions. Out of which one has to be totally new, never seen before. दिमाग लगाना पड़ेगा.
आपने वही पुरानी चीज को नई बोतल में डाल के दे दिया नहीं, तो आपको प्रोडक्शंस पूरे वर्ष में करने पड़ेंगे जिसमें से एक बिल्कुल नया हो। कितनी अच्छी बात है, हमें सोचने के लिए बात क्या कर रहे हैं। आप अंगालो, निकालो, सोचो, बनाओ, तो तब जाके तो हमारी परंपराएं सशक्त रह सकती है। I think it's a very, very positive way of looking at things. And then we also say कि ये जो आप करेंगे नई प्रोडक्शन, उसको भी एक्सपर्ट कमेटी देखेगी। ये नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया कि नया है। तो हर कदम पे you have to be very, very aware and very honest about your work. This is what I suppose is demanded. And naturally, if you are getting money, lakhs of rupees, then this is nothing. And then पूरे वर्ष में आपको एक ही बार सैलरी ग्रांट मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी नेचुरली। उसके बाद एक जो है कि आपको दो स्कूलों में, पाठशालाओं में, in two schools you will have to present or organize either seminar or talk or exhibition or workshop, तो बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए। You can select any school near your campus, near your home, near your institution. So you organize this, but you have to get a signed, sealed certificate from the principal of that school that yes, this is what has happened and we are very happy with it. So ये भी एक शर्त है, it's a condition, it's a precondition. One is 2 productions a year, out of which one should be totally new, never seen before. Second is you have to organize anything, exhibition talks, symposium, etc., in 2 schools and get certified by the principal. Then we got next. Physical verification may also be done. That you write cases as we have this Ramaji Guruji is teaching a lot. And then it has been seen, I'm sorry to say, the reports had come earlier, that somebody was in the garage with one person, somebody had no one, they had given a false address. So physical verification became a must. Please remember, we have to be honest, as I keep saying, हमें सच्चाई से अच्छा काम करना है। Then अब आपका ये है कि अपलोड, हाँ, आपके दोनों प्रोडक्शंस के वीडियो आपने अपलोड करने हैं। You have to upload on YouTube and Facebook and again the Twitter page of the Ministry of Culture. This is a must, a given. हम जो भी काम करते हैं सरकार से पैसा आता है, हमें उसको दिखाना है कि हमने इसमें ये काम किया, तो इस प्रूफ। उसके बाद आगे वो देखेंगे, इस पर कमेटी देखेगी। इसमें चीज और कहते हैं कि आपने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद कमेंट्स भी तो आती है। कोई लिखेगा थम्स अप, कोई करेगा थम्स डाउन, कोई लिखेगा वंडरफुल, कोई लिखेगा oh, never seen before. One would say, what a fantastic thought, what a fantastic idea, whatever. Even those have to be uploaded and shown. तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने अपलोड कर दिया उसके बाद भगवान जाने। No, no, no. It is a complete engagement at every step. जागरूक, है ना? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि ये जो सारा है काम, वो कौन संभालता है कि जहां आप एप्लीकेशन भेजोगे, वो बता देती हूँ कि दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय केंद्र जो है, the National School of Drama in Delhi, I'm giving you the address of the nodal agency. This is where the repertory grants, files, applications are collected, and with all the documents, as I mentioned before, ये जाएगा address to the director, National School of Drama,
बहावलपुर हाउस आपकी वेबसाइट में होगा BAHAWALPUR बहावलपुर हाउस कमा 1 भगवान दास रोड कमा न्यू दिल्ली 11001 clear but it's all there anyway. I'm just giving this now so that you can immediately set to work. Up है कि expert committee will scrutinize on case-to-case basis. Repertory grant का भी जो आप देंगे ब्यौरा, the report, the application, that will be scrutinized on case-to-case basis by expert committee. And believe me, I think these experts are real experts from different fields of music, of drama, of puppetry, of dance, and there are so many dance styles of India, then the folk arts and the tribal arts. So the expert committee and scholars also. The expert committee is very well selected by the ministry. इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए, ये अच्छी तरीके से गिन चुन के बैठाते हैं. अच्छा, इसके बाद आपको आएगा कि हाँ, अरे वाह, वो जो मैंने पहले कहा था कि 1 guru, 2 students, that's the beginning, can go up to 1 guru, 18 students. But for that, also the expert committee will scrutinize the work done. ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया कि हमें 18 चाहिए, the second year itself, और आपको मिल गया 2 से 18. नहीं, we have to work hard and show that the Guruji has really prepared and we need more people in our country to do more work. हम जानते हैं कि पर्सनल इंटरैक्शन रिन्यूअल के लिए होता है कि आपको हर वर्ष मिलेगी, ऐसा नहीं है. 1 वर्ष मिली, आपका काम देखा गया, उसके बाद दोबारा आपको दी जाएगी नहीं फॉर रिन्यूअल, whether it can be given or not in the second year. That also will be done by expert committee. Maybe you are invited, maybe just on your report, whatever, but we need to be clear on this, that expert committee will invite the guru or the director of the organization. They've written both. So I have put a question mark here, question mark for all of you. You can ask in the ministry whether the director can go or the Guruji can go for the talk. Why for enhancement? हमें क्यों आगे बढ़ाना है? उसके लिए आप गुरुजी को बुलाएंगे या आपके जो डायरेक्टर होंगे संस्था के उसको बुलाएंगे. आप देखिएगा. मैं I strongly recommend going through each page of the ministry's website carefully. मैंने इस पे बहुत माथा लगाया. एक वाक्य देखा. Each sentence I read. I put my own comments. I put my own question marks. You also should do that. I'm only taking you on a guided tour. I'm giving you the website. Please go. And if you have any further questions, you can also ask on my page on Insta. We will try to once again give you the answers or indicate where to go, where to find it. आप पूछें तो आप पूछ सकते हैं मुझे भी. मेरी टीम यहाँ बैठी है, हम आपके प्रश्नों के उत्तर जितना जहाँ तक दे सकेंगे जरूर देंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए. Please let us not give up this collective effort to know and utilize what is being offered by Government of India, Ministry of Culture. ये कमी आप लोगों के लिए है. And विशेष करके आज का देखिए, when I was coming up, हाँ, 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 1960s, 1970s. That was the time that I was getting to know all over India. There was no television. ये तो था ही नहीं. There was no. It was word of mouth. Word of mouth which traveled from
place to place, city to city, town to town. And the newspapers, अखबारों में विशेष columns होती थी. The dance critic, the music critic, the art critic, the drama critic, these used to be there. And people used to see those reviews and make up the mind, should we invite her for our next festival, for our next event? Should we not see her? Opinions were built, and then people would come and see. We did not know, as I said, anything about these schemes, if they were there or not. लेकिन today, आज आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको सशक्त बनाने के लिए इतना सारा आपको थाली में दिया जा रहा है. आपके ऊपर है कि आप उसको अच्छे से लें, चबाएं और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करें. लेकिन अपनी मेहनत उसको कभी ना भूलें. मेहनत से ही व्यक्ति ऊपर आता है. We have to go on working and working and working, not only for my fame and name, but for the fame and name and preservation of our great traditions, to keep the name of our gurus. इसके बिना आप सोचो, भारत है क्या? भारत एक महान देश है. संस्कृति कितनी महान है जो हजारों वर्षों से टिकी है. Just imagine Bharat, India, without this culture, no Puran, only the body. No. And we be proud that we are the ones who are keeping it up. It's in our bodies, in our mind, it's in our heart. That is the kind of dignity we have to have for our traditions, जिसके लिए ये सारा आपको बताया जा रहा है. अब मैं आपको और ले चलती हूँ आगे. एक आखिरी जो इसमें बताना है गुरु शिष्य परंपरा लिबर्टी ग्रांट में, ये बहुत ही जरूरी है जानना. इन लोगों ने बहुत बढ़त की है. जब शुरू हुआ था तो मुझे पता भी नहीं था, फिर मुझे सेक्रेटरी कल्चर साहब ने बताया, बीपी सिंह साहब थे, उन्होंने कहा सुनील जी आप लेती हैं कि मैंने कहा क्या लेना है, हमने कुछ लिया ही नहीं सरकार से तब तक. तो कहते नहीं ये तो है, ये मैं तब की बात कर रही हूँ, पिछले मिलेनियम की, 1992 93 ऐसे कुछ. फिर जब भर के दिया तो फाइल हो गई है हिस्ट्री. So the amount has been now raised somewhat, and I'm telling you, the guru or the director, whoever is getting the repertory, gets 15,000 rupees a month. 15,000 एक महीने का गुरु या तो जो मुखिया संस्था का उसको मिलेगा. उसके बाद शिष्यों को क्या मिलेगा? 18 years and above will get 10,000. 18 वर्ष और उसके ऊपर के 10,000 प्रति माह. 12 से 18 वर्ष की उम्र वाले जो हैं उनको 7,500 प्रति माह. Those who are between 12 and 18 years of age will get 7,500 rupees per month. Then we come down. 6 से 12 वर्ष के जो शिष्य हैं उनको 3,500. जैसे कथकली में है तो इतने बच्चों का कथकली सीखना होता है, मसाज होती है, मुद्रा करते हैं बैठ के घंटों घंटों, मैंने देखा है. तो उन लोगों के लिए 3,500 for any between 6 and 12 years of age, 3,500 per month. And उसे भी छोटे 3 से 6 वर्ष की उम्र के उनको 2,000 रुपया प्रति माह. 2,000 between 3 and 6 years of age, 2,000 rupees a month. Not bad. I never heard this before. When I went to that, I said, oh my God, these are the new guidelines. How wonderful. But then, just because somebody is your son or daughter and doesn't know the art, and you put the name to that, we should not do that. We should respect these things. We should respect our art, our guru, and we should have self-respect. मैं बार-बार मैं कहती हूँ, आत्मसम्मान होना चाहिए. कि हम इसको बिठा दे, उसको बिठा दे, चौकीदार को बिठा दे, ड्राइवर को बिठा दे, दूसरे को बिठा दे, या हमारे बच्चे को या पड़ोसी के बच्चे को उसके नाम से दे दें. मेहरबानी करके मेरा करें, ये गलती को नहीं करना चाहिए. अब मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि इसके बारे में आपको और जानना हो तो आप बिल्कुल जाइए, जो मैंने आपको दिया है पहले दिया है.
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एड्रेस दे दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट दे दी है. I've given you all the necessary contacts for more, but do visit the website and get properly acquainted with the documents to be submitted and other conditions. Acha, now I come to the third scheme, which is also very important. This is called scholarship and fellowship. ये है कि ये वर्कशॉप और सेमिनार्स और अपनी जीवनी लिखने के लिए, not for writing memoirs and history and biographies and all that. What is it for? It is for research oriented work. अब ये बहुत ही जरूरी है कि हम याद रखें कि हमारे पुरखों ने कितना रिसर्च किया होगा. Our ancestors, our gurus have done research. They have not only learned from their gurus, but they have delved into Bharatanatyam Shastra, Vinaya Darpanam, and so many other Shastras. And then they have given us the butter, Makhan. So let's be very clear about this. Scholarships and fellowship, this third scheme, is for research-oriented projects. Very advanced training इसमें दी जा सकती है कि गुरु के पास बैठ के, जो सजे हुए गुरु है, जो गुरु लेजेंडरी है, ऐसे गुरुओं के पास बैठ के आप आगे ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसके लिए you also have to be properly trained to sit near the legendary guru and get advanced training. Anyway, तो इसमें मैंने लिखा है कि individual creative effort for revival of some traditional art forms, especially from the rural and tribal areas also. हम हमेशा शहरों की बात करेंगे और only city oriented or big towns oriented. There's so much art in the India's rural tribal areas. We have no idea sometimes. Actually, I've said what we call tribal are the grassroots of our art forms. This is the one that has roots in our soil. What we call Shastriya, classical, has not dropped from heaven. They have grown from here. And that is why if we try to know more about them. So this is the area that this scheme is covering, and I'm very happy about it. Now, for performing arts, what are the scholarships? It says, they are giving more. First, the fellowship. Scholarship यहाँ है और fellowship थोड़ा उससे ऊपर senior लोगों के लिए है. Is what seniors. In music, dance, theatre, folk arts, that's dance music, traditional arts, performing arts की बात कर रही हूँ. I'm only talking about performing arts. I'm not veering out into any other area, architecture and archaeology. Indigenous arts, puppetry. Puppetry has been an ancient art, and they have included that here also, which is wonderful. So senior and junior fellowship for new areas of culture. That is very interesting. शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि नए क्षेत्रों का अध्ययन, अनुशीलन और उसके ऊपर आप क्या काम करेंगे, आपकी सोच. This is something wonderful. And they have given these four such new areas. 4 उन्होंने ये क्षेत्र दिए हैं जो नए हैं इसके लिए. Indology. Indology, you understand, that is research in the various aspects of India's art and culture traditions. हिंदी में कहा है भारत विद्या. भारत विद्या. तो इसमें भारत की कला, परंपरा, इतिहास, उत्सव, दर्शन, फिलोसफी इससे जुड़ी हुई.
lexicology, epigraphy, पूरा पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख यानी एपिग्राफी, पूरा पहले जो हो गया लेख शास्त्र। आपको कई शिलालेख मिलते हैं, आपको कई मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, आपको कई पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इस सब की शोध पढ़ना किसके ऊपर है, किस विषय पे है, हमें पता भी नहीं था वो रिसर्च। So epigraphy is also a very, very important part of understanding our traditions and adding and enriching our traditions. तीसरा है sociology of culture, संस्कृति का समाज शास्त्र, संस्कृति का समाज शास्त्र, sociology of culture। अब ये क्या चीज होती है? बहुत ही आसान शब्दों में मैं कहूँ, in simple words, how do these arts, performing arts, affect the trends, the mindset, the thoughts, the norms, the mores of society? किस तरीके से ये हमारी कलाएं, दर्शनकारी कलाएं समाज को अफेक्ट करती है, समाज में कुछ नए विचार लाती है, समाज के विचारों का और परंपराओं का मूल्यांकन करती है, उसमें क्या था, क्या नया हो सकता है, क्या छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एरिया एंड आई होप दैट सम ऑफ यू विल टेक इट अप। बहुत जरूरी है आज के समय में, जिसको हम कहते हैं द न्यू मिलेनियम, 21st सेंचुरी। बहुत जरूरी है कि लेकिन हम इसको भारतीय दृष्टि से देखें। What is important is that we do this kind of work from Indian, Bharatiya perspective. If you bring other perspectives, they will not mix and match. They have grown there. From their sociological, political, economic point of view, we will have to remain here. हमें जड़ें हमारी यहाँ है, हमारी दृष्टि यहाँ से होनी चाहिए। और चौथा है कल्चरल इकोनॉमिक्स, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र। अब ये भी नया एरिया है। तो जो कहते हैं कल्चरल इकोनॉमी, ये अभी आजकल बहुत इस पे चर्चा हो रही है। The demands of present times are how can we generate income, money? How can we, what is the sustainability of the arts? उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, नए नए आयाम इसमें से उभार सकते हैं। अब देखिए ना, यदि घुंघरू बनते हैं, you know the ankle bells which are a must for Indian dance forms, एक घुंघरू bronze bell has to be handmade, molded, रणगा टिंग टिंग, तो उन्होंने टिंग 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 बनाने वाले, who are the makers, the flowers, the jewelry, the weaving of the special costume sarees. Begin from there. How many things go into one presentation on stage? Are we not generating jobs? Are we not generating money? Give it a thought. And how can we take these things forward? So it's a very important sustainability aspect, perspective, the economy or the economics of culture today. I'm very impressed with this because I'm sure that you are all so intelligent. आप लोग हमसे कहीं ज्यादा होशियार हैं, तो आप लोगों के हाथ में तो सारा गूगल पे वो सब है। लेकिन नॉट ओनली गूगल सर्च हियर आल्सो, उससे आप खाना खाना बनाइए, पढ़िए, पढ़ना बहुत आवश्यक है, पूछिए। You must ask questions also of yourself and of those who know
and evaluate the information. Don't swallow it. ऐसे किसने कुछ बताया आप मान गए नहीं. अपना दिमाग है, अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है, अपने गुरु का सम्मान है, अपनी कला का सम्मान है. We have to keep all this in mind. Then I think we are on the right path. सही रास्ते पे हम हैं. Proposal should be innovative and interdisciplinary. ये बहुत सुंदर बात कही है कि आप जो प्रपोजल बनाएंगे फेलोशिप के लिए वो that should be innovative. नई सोच उसमें कुछ होना चाहिए, नया विचार, नया दृष्टिकोण एंड इंटरडिसिप्लिनरी. ये नहीं कि बस डांस से मुद्रा पे कर दिया. How does it affect the body, the mind? How does it take you forward? What is the connection with ताल, with rhythm? बहुत सारी चीजें आप you know that. मुझे I don't need to, but I'm so enthused with the response we got that I'm just opening up and sharing ideas that come to me right now. Now, up to 400 total fellowships can be given, 200 senior fellowships, 200 junior fellowships. The grant, a separate grant, that comes to later for publishing your account or your report or your research. Will be 20,000, that is a later thing. But graduation is a minimum requirement for fellowship. ग्रेजुएशन आपका होना हो जाना होगा, यानी बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, जो भी है वो आपका बैचलर यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए. कंप्लीट प्रोजेक्ट 2 साल में खत्म करना है. You finish complete your project within 2 years, and after 1 year assessment is done. If your writing, your work is not found to be on mark, they may disturb people later. Remember that. So ऐसे आपको calculate किया जैसे कुछ उन्होंने बात होती वो क्या कहते हैं copy paste not allowed. Okay. Then the advertisement इसकी जो है जाहिर खबर advertisement. Watch out for the advertisement on this Ministry of Culture's website. www.indiaculture.nic.in. www.indiaculture.nic.in. ये वेबसाइट है संस्कृति मंत्रालय की, जहां आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी लिखेगी और जहां आप एप्लीकेशन भेजेंगे. एक और अल्टरनेटिव है CCRT. तो ये जो है आपका कल्चरल रिसोर्सेज ट्रेनिंग वगैरह जो है उनका भी मैं आपको दे रही वेबसाइट, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी. दैट इज www.ccrt.gov.in. दोनों वेबसाइट पे ये रिफ्लेक्ट होगा. It will be reflected, shown on both websites. Now, if you are working in a central or state government and you are an artist, you are a scholar, you want to apply, you have to take leave for those 2 years. 2 years is the thing to complete the project. ये नहीं होगा कि आप नौकरी भी करें, you are doing the job and you are employed and you are doing no. And that you have taken leave has to be certified by the head of the department, head of the institution in writing. Okay? So keep that in mind. And उसके बाद again expert committee will evaluate applications for senior fellowship. Now here there is a little bit of a समझने की बात है कि senior fellowship बहुत बड़ी बात है. Senior fellowship 40 साल के ऊपर के लोगों के लिए है. तो कितनी मेच्योरिटी, कितना एक जज्बा, कितनी सोच 40 years and above.
for senior fellowship. And for junior fellowship, between 25 and 40. 25 और 40 साल के बीच में जूनियर फेलोशिप के लिए you can apply. Yeah. मैंने कह रही थी कि for senior fellowship proposals, the expert committee will evaluate. Okay? They will shortlist and then they will inform and those will be selected. For junior fellowship, though, the person will be called for interview for a one-to-one talk with the expert committee. So this is the difference. We have to keep in mind difference in age, difference in maturity, and now I come to the scope. कि इसमें आपका जो जूनियर फेलोशिप वाला है मामला CCRT विशेष करके दोनों में है तो किन किन में है in which fields to get this fellowship. Yeah. Scholarship. एक second. Scheme of scholarship to young artists in different cultural fields. Yes, sorry, मैं fellowship के बारे में बोल रही हूँ. Now I come to scholarship. You have understood senior fellowship, junior fellowship. Senior fellowship people will get 18,000 rupees a month to work. Junior fellowship will get 40,000 rupees a month. Senior fellowship will get 250,000 rupees per annum. Also, separately, to get the staff together to buy books, to do whatever else they need to do to travel to the place of research and whatever. And exactly half of that for the junior fellowship. That is one thing. Now I come to scholarships, where CCRT also plays a very big role. Center for Cultural Resources and Training also comes under the Ministry of Culture. Music, Hindustani and classical both, vocal and instrumental both. इसमें संगीत में आपका कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी और कंठ्य संगीत वाद्य संगीत दोनों. क्लासिकल डांस एंड डांस म्यूजिक. यहाँ पर हमारी 8 जो आज विधाएं हैं, the 8 dance styles that we count today: Bharatanatyam, Odissi, Kuchipudi, Manipuri, Satriya, Kathak, Mohiniyattam, and Kathakali. So for the dance, but also interestingly for dance music, क्योंकि हर एक ये नृत्य विधा के संगीत एक बराबर नहीं है. अलग अलग संगीत, अलग वाद्य, अलग तरीका. This is, I think, a huge leap forward to respect the individual music styles also that coalesce with the dance styles. And that music only complements the dance. तो आप ये नहीं कह सकते कि Odissi music बजा and you do Bharatanatyam. Doesn't go. So the Carnatic musicians who accompany Bharatanatyam, those who accompany Mohiniyattam, whatever. So dance and dance music, दोनों के लिए ये है. Another one is for theatre. So any specialized aspect of theatre like acting or directing, but not for playwriting and research. ये सारा जो काम है वो performance oriented है. Then I come to the scholarship folk, traditional and indigenous arts. इसमें puppetry, folk theatre, folk dances, folk songs, folk music, and more. Tribal music, tribal dance, the literature that is used, and other indigenous art forms. This is also a very beautiful area of work. There's a lot of scope for original work. Now, light classical music also has not been forgotten. Why? Because it is also very, very
popular genre both in Hindustani and Carnatic. For example, you have Kumari, Dadra, Chaiti, Tappa, Ghazal, and Qawwali, etc. And similarly in South India, also there are the light classical forms of music which can be given scholarships. Oh yeah, I should not forget Rabindra Sangeet. It's very beautifully included here. The special music which was created by Gurudev Rabindranath Tagore, which is called Rabindra Sangeet, music of Tagore's poems and his dance dramas. That is also very different, and that has been included here, the scholarship. The scholarship is for 2 years, advanced training under recognized master in recognized institution. Now, this you have to understand, it's not easy. Recognized institution, recognized guru. 3 to 4 hours minimum a day. हर रोज 3 से 4 घंटे आपको गुरु के पास बैठ के सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये नहीं है इसमें ऑनलाइन कर लिया, no, it won't work. And then acquiring knowledge of theory and supplementary arts. तो आपने मात्र छमछम कर लिया, लेकिन आपको यदि प्रश्न पूछा गया, you know nothing about theory. You don't even know. Many times I've heard, I'm sorry, I have to share this. I've heard that dancers do not know in which tala, in which raga they are performing that song or that pallavi or that chatiswaram or that whatever, Telana. They don't know. Ye bhi nahi pata, they don't know who wrote it. Whether it's Ponaya, Chinaya, Sadashiva, Padivishnu, or whether it's Tantra, or whether it's Purandara Dasa, Tyagaraja, or Suradasa, or Tulasidasa, or Meera, or whoever, Shankaracharya. So, the supplementary knowledge, theoretical knowledge is important. They must learn to put tala, they must learn to sing also, because if they are told, you can dance for Kariya, Dake Batao, Tal Dake, and they say, sorry, no good. Okay? So this is an all-round holistic training. You should look at it from that point of view. And 5,000 rupees a month, travel, books, tuition, charges यदि वो लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये में सारा करना है तो कर सकते हैं why not यदि चस्पा है if you have that flame in you you can do it. Eligibility कौन कर सकता है, who can do it? It has to be an Indian national. I'm sorry, my friends, listeners from abroad, I'll come to you also. We have a lot on page, but not here. Only Indian nationals, general education, hona chahiye up to at least I suppose 10th or 12th. And keen desire has to be exhibited while you go for interview. When they select, your keen desire is to come through. And already should have had 5 years of training previously from another guru. Because now you are going to go to a special guru. So you can't go as a novice. You must have had 5 years of training to which that first guru would have certified. Right. And this is for ages between 18 to 25. 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच वाले लोगों के लिए ये पूरा जो मैंने बताया, this whole thing is for them. Now I come to the advertisement that is issued by CCRT, Center for Cultural Resources and Training. So kindly go to the website. I've already mentioned the website for proper information, more information, and where the documents have been submitted. Okay. I want to mention why this thought came to Usha and me, and we said we must work on this because, as I said, we never knew. Maybe the schemes were not there. हमें नहीं पता था हमारे टाइम में, लेकिन अब जब पता हो गया तब भी छोटे गांव में यहाँ वहाँ लोगों को इतना पता नहीं है, नाम सुना हो, they might have heard the name, but they may not have understood
the wherewithal, the information. इसीलिए आपके साथ ये सारा हम साझा कर रहे हैं. आपको ही फायदा होगा, you will be the beneficiaries, and you will benefit the Indian art forms and Indian culture. That is the selfish motive. Okay? ये हमारा स्वार्थ है. ये सरकार दे रही है तो आप लीजिए, अच्छे से काम कीजिए और हमारी संस्कृति का नाम ऊपर कीजिए. Okay, now I will go to the international cultural relations. ICR. This is something for Indians living abroad who are learning, who are performing, but as also foreigners who are learning Indian art forms. So every cultural center established by Indian government, Indian Cultural Center, they have teachers for yoga, for tabla, for tattva, for Odissi, Bharatanatyam, whatever. And if you wish to avail of that scholarship, then your application has to be certified by the head of the Indian mission, embassy, or consulate general of that particular place, or you have to go. If you have to go, if you're in your town or city, it is not there, it has to be certified by them, and that will be also forwarded. You can also forward, they will also forward it. The Global Engagement Scheme, it is called. Global Engagement Scheme, and MOUs have been signed by so many countries, wherever there are these cultural centers, and apart from that. So you have to find out from the site ICR, International Cultural Relations, and then the grant in aid for Indo-Foreign Cultural Society is also there. For the festivals of India that are organized abroad, you can also perform in that. If all this is taken care of, आप उसमें भी कर सकते हैं. और इसके बाद आपको हाँ, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताऊं. If you are empaneled with ICCR, Indian Council for Cultural Relations, and then you say, why am I not being invited for the, but two empanelments are important, necessary. एक है ICCR के साथ, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो फेस्टिवल सेल है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, उसके साथ उनका empanelment अलग. So you have to apply to both, get empaneled in both places, so you can have double benefits. Don't forget. And then, yeah, I've said that. Now I come to something very important that you will love. This is for all. For our foreign friends, artists who are learning and performing Indian art forms, and for Indians living abroad as well, and for भारतीय कलाकारों के लिए भी, और जो भारत की कला को बाहर उजागर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए. ये है Tagore National Fellowship for Cultural Research. ये बहुत ही जरूरी है आपको समझना. Tagore National Fellowship for Cultural Research, TNFCR. ये फेलोशिप का मिलना बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात होगी. जैसे it will be an honor to receive this fellowship, and with that honor comes a very good honorarium also. 80,000 रुपया पर महीने. आपको 80,000 रुपया एक महीने में मिलेगा. 2,50,000 annually मिलेगा for field trips and engaging research people, etc. लेकिन मात्र 15 ऐसी, only 15 such fellowships are available, so that your research project has to be really, really strong and far-reaching, with far-reaching ideas.
This is, remember, for both. Foreigners learning performing Indian dance, Indians living abroad performing Indian arts, all arts, and for Indians as well. भारतीयों के लिए भी और भारतीय कलाओं की प्रदर्शनकारी जो लोग हैं बाहर उनके लिए भी ये 2 वर्ष के लिए दिस फेलोशिप इज फॉर 2 years. अच्छा, इसके तहत एक और चीज है, फेलोशिप हो गई, ऊपर स्कॉलरशिप है, 25 स्कॉलरशिप, 15 फेलोशिप, 25 स्कॉलरशिप, 80,000 2.5 पर एनुअल अलग 2 वर्ष का स्कॉलरशिप में आपको मिलेगा 50,000 पर मंथ और 10,000 आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, यहाँ वहां जाना है, किताबें खरीदनी है, जो भी करना है, पर मंथ. अब होता है कि 6 monthly review. You can't say 80,000, yeah, my bank account is getting fatter, I'm very happy. No, please don't do that. You will have to put in hard work from the beginning, not that you have given your proposal is selected. Every 6 months there will be assessment, there will be review, and that review is done. Not just like that. Scholars sit on it. Real big experts sit on it. So 6 monthly review and infrastructural, okay. Publication work at the end of 2 years. 6 monthly review hoga. So 4 reviews at the end of which your publication should be ready. It will be done for future research scholars also. It will remain as proof of your fellowship. And then infrastructural support from nodal organization. This is a very lovely, beautiful arrangement, I think. Indira Gandhi National Center for the Arts, IGSCA, or Sangeet Narodaya Academy, or National School of Drama, CCRT, Lalitala Academy, Sahitya Academy, Kalakshetra in Chennai. Now, all these can be approached according to your proposal, and they give you the nodal agency. So you get connected to them, and they give you infrastructural support. And you have to be there or visit them. So the whole support system is offered to you, not only financial support. And I think we must take full advantage of this generosity of the government of India, especially for preservation, promotion, and practice of Indian arts, especially today, performing arts. हम लोगों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, लेकिन I would say once again and again, with honesty, with integrity, with great affinity to the goals and the values of Indian culture and traditions. हमें सच्चाई से करना है, मेहनत से करना है, भारतीय मूल्यों को, आदर्शों को, कला परंपराओं को याद रख के करना है, गुरुओं का सम्मान करके करना है. And in this area, in this era rather, of YouTube, Google, Facebook, thumbs up, thumbs down, depression, mental stress, jealousy. That one got that much. I didn't know. Oh, that one got that. We have to learn to be hardworking. I keep saying, I've come up like that. No support anywhere. Hard work. 8 hours a day, 6 hours a day, 4 hours a day. Go on and on and on and on and on. And I have taken meetings from Amrisi Guruji, Gurucharan Bahadraji. I've got this Kathakali, Bharatanatyam. Here, from my Krishna Rao sir, Bharatanatyam Guruji. I've got so many scoldings, but always head down. नतमस्तक होके हमने सारा लिया भी तो आज हम ये हैं, हम हैं तो हैं, लेकिन ये सारा नम्रता, respect, humility and respect are the key words
I got so many likes, so many comments. I have millions of followers. Okay, so what? Tatakim, tatakim, tatakim. Then what? What is the essence of you which reflects in your heart? वो दिखाइए, तब जाके दुनिया मानेगी ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जैसे मायावी दुनिया है। ये भी है असली दुनिया में क्या होता है कि आज तक हम लोग टिके हुए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे बिरजू महाराज जी का तक नाम है, गुरु सर का तक नाम है, पद्मा जी आती है, सुब्रमण्यम जी है, संयुक्ता मणि जी थी, उमा शर्मा जी है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इंद्राणी हिमात, दमयंती जोशी, शांता राव, कमला लक्ष्मण, Vajeti Mala heard me at 91, and when she does this, you can see the purity of her style, the strength of her style. कमाल है। अभी आशा पारिक जी, मुझे विज्ञान में आशा पारिक जी, I had the good fortune of presenting Amrit Ratna award to her, and we talked afterwards. And she and Mahita Hemanji are very good friends, and Mahita Hemanji had come specially for my performance, my presentation. Solar Escape in 2019. That was the story of my life on stage, just me and my life. And we talked about so many things. The gentleness came. There's no ego. Ego for what? Yeah, self-respect, but ego is different. तो हमें हमारी ऊपर गर्व होना चाहिए, संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, देश पे गर्व होना चाहिए, इस मिट्टी पे गर्व होना चाहिए जहां से कला पनपी, जहां कैलाश में स्वयं नटराज नृत्य करते हैं, नटेश्वरी भगवती नृत्य देखती है, तांडव है, लास्य है, क्या नहीं है। बट अभिमान जिस वक्त किया, ये जर्नी शुरू हो जाती है, याद रखिएगा। मेरे जीवन की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। I'm sharing what I stood for, and I wish you, everyone, each one of you, the best in life, great fame, name, joy, and great art. May that come your way. May you carve a new path. आप कुछ नया लेके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है, और इसी के लिए ऐं सरस्वत्यै नमः। भगवती सरस्वती को नमन करती हूँ। I bow to Goddess Saraswati, the presiding deity of knowledge, grace, arts, wisdom, beauty, vidya, kala, medha, pragya, ज्ञान, विद्या की देवी सरस्वती को नमन है। From tomorrow. From tomorrow we begin Navaratri, the first day of Navaratri. So be joyous, be happy, pray, dance, sing, drama, theatre. My best wishes, love and blessings.